Yes, good afternoon, students. How many students are there? Only 10. Why 10 students only? Others join fast so that I can start. All of you join fast. Yes, everybody, good morning, good afternoon. Okay, just we will recap. Okay, up till now, whatever we finished, that only we will first recap. So, about fibers, we have learned. Okay, fibers from that, two types of fibers are there, natural and synthetic fibers. Natural fibers we can get from plants, animals, okay. Then synthetic fibers, that is the man-made fibers. In the natural fibers, the examples are cotton, wool, and silk. Whereas in the synthetic fiber, that is man-made fibers, many are there. Terylene, nylon, polyesters, all these are the synthetic fiber. Then from the from the natural fibers, in the last period we have discussed about spinning and weaving. That means from yarn we have to spinning, twisting the cotton. From cotton only that fiber that we have to prepare first yarn by twisting it by hand, or we can say by machine. Second, weaving also. The weavers, they are weaving the fibers and they prepare the clothes. Okay. So for that, they are using machines or by hand only. So that by hand, if they are doing, that is known as the handloom, and the weavers only weaving the clothes. Similarly, wool also, that woolen clothes like sweater or cardigans, shawl, all these things either by hand or by machine only, all these things are prepared. Okay, so now today's, that is dyeing and printing. So in the last period I told that I will demonstrate you how to dye the clothes. Okay, dyeing and printing. So let me first explain, then I will demonstrate you how we can do this at home also. Okay. So dyeing and printing, this is the third step. First step, weaving. Second step, weaving, and the third step is dyeing and printing. So the third step in the making of cloth is a dyeing, or we can say dyeing, or we can say as a coloring. Dyeing मतलब coloring भी, उसको color करना, because जो weavers cloth बनाता है, final cloth जब होता है वो usually white color का होता है ना. कॉटन कैसे है, व्हाइट है. बट जब हम मार्केट से कोई क्लोथ खरीदते हैं तो कलरफुल होता है. सो हाउ, दैट इज ओनली द डाई, कलरिंग करना उसको. ठीक है. So the fabric is dipped in a colored liquid and boiled it. Then it is dried. Sometimes the yarn is dyed before it is used to make a fabric. People who dye fabric are called dyers. है ना, जो ये फैब्रिक को डाई वगैरह करते हैं, कलरिंग करते हैं, दे आर नोइंग एज अ डायर्स. जैसे वीवर्स हम लोग होते हैं ना जो वीविंग करते हैं, दैट इज दे आर नोइंग एज अ वीवर्स. Similarly, those who are the people, those who are doing this work, they were knowing as a dyers. So see, we cannot boil the things, okay, here, but usually अगर हम boil करेंगे, so the color will not go. After washing also, that color will not go. Perfect, एकदम permanent color हो जाता है. But here, just I will show you how they are using this one. So natural colors only we will use. Natural colors at home only you will get like a turmeric, हल्दी जिसको बोलते हैं. So that you have to mix in a water, then you stain it. उसको आप stain करो, जितने भी sediments impurities रहेगा वो आपको निकल जाएगा. वो liquid में a small piece of white cloth you will take, then you dip it, keep it for a few minutes. उसको रहने देना few minutes तक, and then you take it out, okay, and dry it in the sunlight. उसको फिर आप ड्राई करके सुखा लो, तो आपका वो व्हाइट क्लोथ जो है वो टर्मरिक, बिकॉज टर्मरिक इज अ नेचुरल कलर, तो वो येलो कलर का आपको मिल जाएगा.
Similarly, you can use blue, जो हम that white clothes में हम लोग देते हैं ना, रॉबिन ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, नीला, हिंदी में नीला बोलते हैं, जो व्हाइट क्लोथ में, सो दैट इट विल लुक नाइस। तो वो ब्लू को भी आप पानी में थोड़ा सा एक ड्रॉप blue ujala or anything you drop add, then you dip in that white clothes, then you dry it in the sunlight, तो आपका वो क्लोथ जो व्हाइट वाला है वो ब्लू बन जाएगा। सो डाइंग मीन्स कलर देना है, बिकॉज फैब्रिक जो है वो व्हाइट है ना, जो बॉटम जो है वो बेस जो है उसका व्हाइट है। अब हमको कलर क्लोथ चाहिए, जो शॉपकीपर्स है या जो टेलर्स है उनको कलर क्लोथ चाहिए, तो उसको डायर्स जो है इस तरह से कलर करते हैं। फॉर परमानेंट उन लोग क्या करेंगे, कलर लेते हैं, उसमें डिप करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीन्स उसको ब्लॉक प्रिंट करना। प्रिंटिंग मीन्स ब्लॉक प्रिंट करना। This is some fabrics have a pattern printed them on them. So for printing, the dye is placed on a block or roller which has the print carved on it. The roller or block then stamp the print on the fabric. ऐसे यूजुअली वुडन के जो है ब्लॉक्स होते हैं, है ना, जिन लोग ये यूजुअली जो बिजनेस करते हैं उनके पास ऐसा अलग अलग डिजाइन के बॉर्डर यू कैन टेक, or in between a small flower or anything, so they are having a small blocks, and वो blocks में जो है उनका डिजाइन हुआ, कार्व किया हुआ रहता। अब जो ये क्लोथ्स है, जो पीस रहेगा फैब्रिक का, उसको कलर, उसमें वो ब्लॉक को जितने भी कलर उनके लिक्विड्स है उसको डीप करते हैं, और डीप करने के बाद जो फैब्रिक, जो क्लोथ्स है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ही पीस लाई हूँ, आई ब्रॉट ओनली वन पीस, दैट इज सो वेरी डिफरेंट। अब ये जो है व्हाइट आपको दिख रहा है, बेस कलर इसका क्या है, व्हाइट है। अब हम इसको कलर करेंगे, डाई करेंगे आफ्टर दिस दैट आई विल। सो ये बेस कलर में अब उनको कुछ डिजाइन करना है, तो उन लोग कैसे करेंगे, वो ब्लॉक पीस जो है कलर इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें वो प्रेस करते हैं, और जो एक रोलर ऐसा रोल करते हुए वो जाते हैं। तो उसके बाद उसको डाई करते हैं, और उसके बाद उसमें छोटे छोटे जो भी ब्लॉक्स है, बॉर्डर है, वो इसमें प्रिंट होके आता है। तो दिस इज एक्चुअली द वे, द डाइंग एंड प्रिंटिंग, जो हम लोग मार्केट में हम जब खरीदते हैं तो हमको सब प्रिंटेड मिलता है ना, प्लेन कलर भी मिलता है, प्रिंटेड भी मिलता है, तो वो कैसे, तो वो इस तरह से करते हैं। सो दिस इज व्हाट नोइंग एज अ डाइंग एंड प्रिंटिंग। Clear? Now I will show you how to dye the clothes. This is a white clothes, everybody. Now I will add, so one small bowl I have taken. So in that I have a food color. Actually this is a food color, so I will use this one. You can, I brought turmeric powder also. But I will use food color because I don't have a stainer, so I forgot to bring the stainer. So that's why I will use a food color here. Okay. Good afternoon. Network problem. Some of the students, they have written their network problem. Why my voice is not audible to you all? Any one of you write down yes or no. My voice it is audible to you all, because here everything is visible only. But some of the students, they have written their ma'am network problem. No ma'am. My voice is not audible to you. Pratyaksh, you have written no. My voice is audible or no? Yes or no? Audible. Okay. So maybe their side is problem. Okay. So I will add here 2-3 drops of food colors in that. Okay, food colors I am adding here. So you can see, you cannot. Okay. Afterwards I will show you. Okay. So now after that I will add a drop of water. ठीक है ना, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे,
Okay. After that, so now it's become a yellow. Can you? Yes, little. Okay. So now I will dip this white clothes in that yellow color. Oh, I forgot one thing. Remove the extra water in that. Now see, this now become yellow. Yes, because I use yellow food color. Okay, so now the white color, in this way the dyers they are using dyeing the clothes, है ना? वो जो dyers होते हैं, लोग जो the people जो है वो इस तरह से क्लोथ को डाई करते हैं. अब इसको क्या करना है? हमको सनलाइट में ड्राई कर देना. क्या करना है? सनलाइट में ले जाके हम इसको ड्राई कर देंगे. ड्राई कर दें. अब ड्राई होने के बाद आप और एक चीज करते हैं. अभी ये ड्राई हो गया, ठीक है. अब ये ड्राई होने के बाद मैं अभी तो ड्राई नहीं कर पाऊंगी. Afterwards, I will dry this. Then, in that only, you will use your color. आप लोग ड्राइंग करते हो ना, आप घर में ये प्रैक्टिस करो. फिर एक्टिविटी नोटबुक में टेक अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ, नॉट दिस मच बिग. आप इतना छोटा आप एक पीस लोगे आपका, ठीक है. उसमें आप डिप करोगे व्हाइट क्लोथ को कलर पे. आप ले लो फूड कलर, ले लो कोई भी कलर का. आप या तो टर्मरिक पाउडर ले लो, जैसे मैंने बोला टर्मरिक में आप पहले वाटर ऐड करोगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लो, स्टेन करो, तो जितने भी इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाएगा. अदरवाइज आपके क्लोथ पे वो पूरा ड्राई हो जाता है. इसीलिए स्टेन कर लेना उसको स्टेनर से, ठीक है. डिप करने के बाद इसको ड्राई करो. ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे? ड्राई करने के बाद yes, you can do this activity at home. Take photos and send to me. Good, very good. And afterwards, what you will do? You will take, if you have a block, wooden block, it's okay. If you don't have, take a brinjal not, sorry, ladies finger. आप भिंडी ले लेना, एक लेडीज फिंगर ले लेना, उसके टॉप पार्ट को कट करना, ठीक है. टॉप पार्ट को कट करने के बाद आप कोई कलर, आपके पास जो कलर होंगे ना, जैसे ड्राइंग के लिए आप यूज करते हो, पहले उसको वाटर मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड कलर, फिर वो लेडी फिंगर को क्या करोगे? लेडीज फिंगर को डिप करना. और उसके बाद आप जैसे भी आपको डिजाइन करना, फ्लावर बनाना है तो आप ऐसे ऐसे करके फ्लावर बना सकते हो. आपको अगर बॉर्डर बनाना है तो कंटिन्यूअसली ऐसे आप उसको, तो आपका क्या बन जाएगा? एक एक्टिविटी कि किस तरह से क्लोथ में, फैब्रिक में डाइंग और प्रिंटिंग होता है. क्लियर? आपको आइडिया आ गया किस तरह से डाइंग और प्रिंटिंग होता है क्लोथ में. अब मैं इसको ड्राई करने के बाद आपको ट्विस्ट को दिखाऊंगी. मैं घर में वो प्रिंट करके रखूंगी और फिर मैं आपको ट्विस्ट को दिखाऊंगी, ठीक है, कि डाइंग और प्रिंटिंग हम घर में भी कर सकते हैं. अनदर आइडिया, आई फॉरगॉट टू डू दिस वन. Before dyeing, you think you can do it like this also. You take a cloth like this, white cloth, उसको थ्रेड से अच्छे से आप उसको थ्रेड से बांध देना. अलग अलग जगह में, दूर दूर जगह में, ऐसे 3-3, 4-4 जगह में आप इसको थ्रेड से बांध देना. मैं थ्रेड लाई पर मैं भूल गई करने के लिए. देखो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग घर में इसको ट्राई करो. ओके, वेयर आई कप्ट माय थ्रेड. यस, सो ऐसे थ्रेड लेना, ठीक है. ओके आर्यन, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके आर्यन, see, dyeing and printing, we are today learning about dyeing and printing. So dyeing means what and printing, how we have to do the printing. अब ये तो ऑलरेडी मैंने डाई कर लिया. एक्चुअली ये पीस ऑफ क्लोथ है, व्हाइट कलर फैब्रिक, व्हाइट फैब्रिक का ही है ना. एक व्हाइट कलर का आपको ऐसे पीस लेना है, ठीक है. अब उसको डाई करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है? एक बाउल में, if you have any food color,
then okay. If you don't have any food color, then you use turmeric powder. Turmeric powder, add little 1 or 1/2 spoon turmeric powder, then add water, mix it properly, stain it in another bowl. उसको stain करना क्योंकि उसमें बहुत impurities होंगे, है ना? तो उसको stain करने के बाद आप वो white कलर का पीस जो है उसमें dip करो. आप देखोगे कि आपका क्लोथ व्हाइट कलर जो है वो येलो हो जाएगा क्योंकि टर्मरिक येलो पाउडर है. सो दैट इज व्हाट नोइंग एज डाइंग. उसको बोला जाता है डाइंग. देन प्रिंटिंग. Printing means then afterwards you have to dry this cloth, piece of cloth. इसको dry करो और dry करने के बाद आपका जो कलर होता है, जो हम लोग पेंट ड्राइंग करने के लिए जो यूज करते हैं कलर, उसको एक उसमें मिक्स करो. बॉटल कलर्स भी आते हैं, ऐसे बॉक्स में भी कलर आते हैं. उसको मिक्स करो पानी डाल के. लेडी फिंगर्स को उसके टॉप को कट करो. फिर वो कलर में आप लेडी फिंगर को डिप करो और आपके जो ड्राई किए हुए क्लोथ है उसमें आप प्रिंट करो. So that is known as a print because we don't have any blocks, है ना? हमारे पास कोई ब्लॉक तो है नहीं, तो हम वेजिटेबल प्रिंटिंग करेंगे. हम क्या करेंगे? वेजिटेबल प्रिंटिंग. आप ये ले लो, आप ऑनियन का छोटा अंदर वाला पार्ट भी आप लेके उससे भी आप कर सकते हो, लीव्स बना सकते हो. ठीक है, तो आप ये घर में एक बार ट्राई करो. आज मैंने ये आपको ड्राइंग करके दिखाया. मंडे में इसमें आपको ट्यूसडे में इसमें आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी क्योंकि इसको ड्राई होना जरूरी है, नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा. अब तो इसको ड्राई करना पड़ेगा. डाइंग हो गया, so we have to dry it. Clear? So dyeing and printing, I think everybody understood. Now one more ideas I am giving you. आप जब डाइंग करते हो ना, आपका जब क्लोथ है इसको ऐसा आप लो और ये थ्रेड है ना, थ्रेड से इसको अच्छे से बांध देना. क्या करना? नॉट. ऐसे ऐसे करके नॉट. ठीक है, फिर आप यहां पर और एक नॉट करो वही थ्रेड से. ठीक है, ऐसे आप टाइटली नॉट करना है. फिर यहां पर भी आप ऐसे नॉट करो. तो आप ये डाइंग करने के पहले आपको करना, मैं आज भूल गई थी इसीलिए. तो आपको देखो यहाँ पर नॉट जो बांधा है. अब हम जब इसको डिप करेंगे, ड्रिप करने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको स्टेन कर देंगे, रिमूव कर देंगे. और उसके बाद जब हम ये थ्रेड खोलेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? जो टाई किया हुआ पार्ट है ना वो व्हाइट ही रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे, जो हम लोग जयपुरी प्रिंट बोलते हैं या बांधनी प्रिंट, इसको बांधनी प्रिंट बोलते हैं, है ना? तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी ट्राई करके देख सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइंग एंड प्रिंटिंग. ओके, देन दिस third steps is over. First spinning, then weaving, then dyeing and printing. Then the next one is finishing. Now everything is over. yarn से हमने weave कर दिया, weave से हमने dye कर दिया, then print also over. Now the finishing. What next we will do? So the next is after dyeing and printing, the fabric is made glossy and smooth. This process is known as finishing. इसको ये फैब्रिक को सब हो गया, फैब्रिक बन गया, वीविंग हो गया, अब ये डाइंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, एवरीथिंग इज फिनिशिंग. व्हाट एल्स दे आर डूइंग? सो वी डोंट हैव एनी ग्लॉसी मटेरियल्स. उसके लिए ग्लॉसी मीन्स जस्ट फॉर शाइनिंग, है ना? ग्लॉसी एक लिक्विड आता है, सब ट्यूब्स भी आते हैं, लिक्विड में भी आता है. तो उसमें हमको क्या करना रहता है? डायर्स और उन लोग जो ये करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, जो फैब्रिक रेडी करते हैं उसको फिर ग्लॉसी, उसमें एक चमक, ग्लॉसी मीन्स शाइनिंग, फॉर शाइनिंग, है ना? उसमें स्मूथनेस, दैट ऑल्सो दे आर डूइंग. सो दैट इज ओनली नोन एज अ फिनिशिंग. ये लास्ट स्टेप, फिनिशिंग मीन्स लास्ट स्टेप. Okay, that also they used to do. Okay, now the next one. Now fabric is ready. Fabric is ready. अब हमको एक लॉट में फैब्रिक मिल गया, हमें क्लोथ मिल गया.
है ना. देन द नेक्स्ट स्टेप स्टिचिंग. अब ड्रेस स्टिच करने के लिए टेलरिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज टेलरिंग. अब टेलरिंग जो है व्हाट दे विल, टेलरिंग विल स्टिच योर क्लोथ. फिर टेलरिंग जो है वो फैब्रिक खरीदते हैं लॉट में, फिर उसको कट करते हैं अलग अलग साइज में, एस साइज, एम साइज, एल साइज, एक्सएल साइज, so many sizes are there. So according to that size they are stitching different clothes, shirts, dress, frock. ये सारी चीज जो है कौन स्टिच करता है? टेलरिंग. Who is doing all this work? Tailoring is doing also. This is what. So the tailoring means the finished cloth is cut and stitched by tailors. Okay. So in a big garment cloth factory, the cutting and stitching is done by machine. Of course, सिलाई machine होता है ना? So big garment. Okay, one more thing. All this thing they are where it is doing garment factory. So that is known as a garment factory. उसको बोला जाता है garment factory. अब ये garment factory में क्या होता है? garment factory में जो टेलर होते हैं they used to cut the clothes and stitch करके वो सारे रेडी करते हैं, ड्रेसेस रेडी करते हैं. There are machine for stitching button, zip as well. The whole process is known as a tailoring. पूरा प्रोसेस. अब ड्रेस रेडी हो गया, देन बटन्स, दे हैव टू पुट द बटन्स और दे हैव टू ऐड द जिप, है ना. कभी कभी आपके ड्रेस में जिप भी होता है, चेन जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है, और अदरवाइज बटन्स होते हैं. तो ये सारी चीज फिनिशिंग, ड्रेस रेडी होने के बाद ये वर्क भी है. तो बड़े बड़े गारमेंट फैक्ट्री में ये सारे चीज भी मशीन में ही किया जाता है. This is also they used to do in a machine only. Okay, stitching, of course, silai machine is there. They used to stitch the clothes, and afterward, then this one button and zip and all this thing, other work that also they used to do in the. So this whole process is known as the stitching and is known as a tailoring. So here we finish our how clothes made, है ना. ये हमारा खत्म हो गया how clothes are made. So from starting, say from farmers that growing cotton, then afterwards then that flower burst, then they collect all the cotton, they remove the seeds, then spinning, then weaving, then dyeing, printing, then finishing for glossy and smoothness for that, and then afterwards tailoring. So these all are the process. ये इतने सारे प्रोसेस होते हैं एक फैब्रिक रेडी करने के लिए. हम शॉप, और हम क्या करते हैं, हम शॉप में जाते हैं, कोई भी गारमेंट बड़े बड़े मॉल्स या इसमें, और हम जाके रेडीमेड शॉप. बट हमको ये नहीं पता है कि ये रेडी करने के लिए कितने सारे लोग इसमें काम करें. सो मेनी, एंड सी एवरी दैट वर्क डिफरेंट पीपल आर, वन पीपल नहीं, एक ही लोग सारे काम नहीं करते, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. So spinning department one, weaving department one, dyeing and printing one, then tailoring one, then again packing also there. They have to pack and then they have to send for the selling. So these are the different department or different, we can say, people. Okay, they used to do all this work. Okay, children. So here we finish our how clothes are made. Now the last topic is left, that is टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ. अब हमने पढ़ लिया है कैसे बनाना, अब हम ये पढ़ेंगे कि क्लोथ को किस तरह से देखभाल करके रखना चाहिए. ओके, सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू.